Welcome to all of you in today's lecture of class 10. This lecture about magnetic chapter magnetic effect of electric current. As you know, in the previous lectures already uploaded in the YouTube, we covered so many topics of this chapter, from Oersted experiment to then snow rule, and then magnetic field due to a straight current carrying conductor, right hand thumb rule, magnetic field due to a current carrying circular coil. So before going through this lecture, you should go through the previous lectures of this chapter already uploaded in the YouTube. Okay, so in today's lecture, in this lecture, we will discuss about the clock face rule. Clock face rule to determine the poles of a current carrying circular loop. Okay, so today's lecture is about, today we will discuss about clock face rule. Clock face rule to determine the magnetic poles, of a current carrying circular loop, Okay, so this is our today's topic. The topic is that the clock face rule to determine the magnetic poles of a current carrying circular loop. As we have discussed in the previous lecture, we plotted the magnetic field pattern due to a current carrying circular loop. Okay, you all know, you can go through the lecture, that lecture of magnetic field due to a current carrying circular coil. Okay, I explained you about the magnetic field of a current carrying circular coil in that lecture. Today, the magnetic field, suppose current is in this direction, suppose clockwise direction, then the magnetic field lines will be anti-clockwise here, and at this side the current is in downward direction. So the magnetic field lines will pass through like this one. We can determine with the help of right hand thumb rule. Okay, so the magnetic field lines will be clockwise here, and at the straight of current carrying circular coil, the magnetic field lines are straight towards its through its axis. Okay, so you can go through that lecture of magnetic field of current carrying circular coil, pattern of magnetic field. Now in today's lecture, we will determine the magnetic poles of a current carrying circular coil. Okay, तो आज के इस लेक्चर में हम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि जो भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होता है वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. आज हम देखेंगे कि अगर किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में, मान लीजिए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो हम जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं. ओके, सो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एज ए थिन डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो हम इसके पोल्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसमें कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा. सो यू कैन सी हियर दैट देयर आर ऑलवेज टू फेसेस इन द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. वन फेस इज टुवर्ड्स यू, दिस इज द फ्रंट फेस फॉर यू, दिस इज द फ्रंट फेस फॉर यू, and for me this is the front face. Okay, means there are two faces in the circular coil. This is the front face for you, and there is a back face also, which to that face I can see properly, but you can't see properly from your side to the back face. And I can't see the back face for me, which is front face for you. Okay, so in a current carrying circular coil always there are two faces. Okay, this is the front face and I am showing you the backward face for you. I am turning the circular coil. Oh, this one is the back face for you. Suppose this is the front face, then there is also a back face. This is the back face for you. Okay, तो किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में हमारे दो फेस होते हैं. एक ये फ्रंट फेस जो हमको दिख रहा है ऐसे, अगर मैं आप ही की डायरेक्शन से इसको देखता हूं. एक इसका बैक फेस जो पीछे साइड से है, जिसको हम कैसे देख पाएंगे, इसको ऐसे टर्न करके, ये दिस इज द बैक फेस. अब ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में करंट को हम दो टाइप से फ्लो करा सकते हैं. डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं. सपोज दिस इज द फिगर फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. ओके, suppose this is a circular coil and this is the direction of current in the circular coil.
So you can see this direction in the front face is clockwise. This direction is clockwise. Okay, we can see here, right here, clockwise current. Clockwise current means current is flowing clockwise. And we are also taking another figure here, another case. Suppose this is the current carrying circular coil, and now we reverse the direction of current. Suppose now in the first case current is flowing this one, we can connect this with a battery here. Okay, current is flowing from this direction. Now reverse process, okay, means minus and this one is the plus, so current will flow from this terminal, means like this one in the second case. So here the direction of current is anti-clockwise, because generally clock moves like this one, clock moves like in this one, in this way, but current is moving opposite to clock, means anti-clockwise. So here anti-clockwise current, and current, I can say current flowing anti-clockwise. Okay, current flowing anti-clockwise in the second figure. Now how we can determine the poles of these circular loops or circular magnets? This is a thin disc-like magnet. So please see here. Suppose this is a current carrying circular coil. I am discussing the first one, this figure, okay, current clockwise, and this one second. Firstly, I am explaining this one, okay. So here, suppose in this phase the current is clockwise. The current is clockwise. So how will be the magnetic field? This, if current is clockwise in any phase, okay, in the front phase we can say, then this phase behaves like as a south pole. This phase will behave like as a south pole, and the back phase will behave like as a north pole. Okay, how? Suppose that here current is clockwise, then if I put the thumb in the direction of current, then magnetic field will go inside and finally it will come to this type of phase, okay, because it will make a circular loop, and from here current is downward, magnetic field lines will go from this one and they will come at this phase. So magnetic field line outside north to south and inside south to north, means they are coming to this phase outside. So we can say this is the south pole. So generally if current in any phase of the circular coil is clockwise, then please remember that phase will always behaves like as a south magnetic pole. Okay, so here current is clockwise, current is in the clockwise, so this phase, this is the means the front phase will behave like as a south magnetic pole. So I can write here, I am making with another ink here, okay, I can write here as a south means I can write here S, this is S, okay, and if I put the arrow at this end of the S and this end of the S also, then this satisfies the direction of current. मीन्स मैंने ये कहा कि अगर किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में अगर फ्रंट फेस पर या जो फेस को हम देख रहे हैं अगर उस पर क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो होता है तो वो वाला फेस हमें साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और तो यहाँ पर देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये साउथ पोल होगा। और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक एस लिखा, साउथ पोल के एस, और एस के ये वाला एंड और ये वाला एंड पे एरो लगाया। तो क्या हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, उसी को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है क्लॉकवाइज, और उसी डायरेक्शन में ये एरो भी है। सो दिस फेस विल बिहेव लाइक एज ए साउथ पोल। बट रिमेंबर हियर, प्लीज नोट दिस पॉइंट, इफ there in this phase the current is clockwise, then what will be the direction of current in the back phase? Can you imagine the direction of current in the back phase? Suppose this is south, this is south, this is the clockwise for the front phase, but I am moving my fingers like in this way. If you will stand from that side, then what will be the direction of current? That will be anti-clockwise, because for that person clock will move like this one. ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस वे। देखिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, इस बात को समझिए। मेरे लिए ये फ्रंट फेस है, तो आप मेरी जगह पर आप अपने आप को इमेजिन करके देखिए, मेरे लिए करंट क्लॉकवाइज जा रहा है। मेरे लिए करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो मेरे लिए ये फेस कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल।
अगर किसी फेस में अगर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, उसको मतलब कौन सा पोल कहेंगे, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब यहां पर समझिए आप पहले, अगर मेरे वाले फेस पर करंट की डायरेक्शन कैसे है, पहले मुझे इमेजिन करके देखिए, मेरे जगह पर खड़े होकर के, ये ऐसे करंट जा रहा है, मीन्स मेरी तरफ से करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से मेरी अंगुली को देखें, जब मैं अंगुली को घुमा रहा हूं इस फेस पर, जो मेरे लिए बैक फेस है लेकिन आपके लिए फ्रंट फेस है, तो आपके लिए मेरी अंगुली कैसे है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आपके लिए मेरी फिंगर जो मूव कर रही है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, क्यों? तो आपके लिए जो क्लॉक घूमेगी वो ऐसे घूमेगी, आपकी तरफ से क्लॉक ऐसे घूमेगी, लेकिन मेरी तरफ से क्लॉक ऐसे घूमेगी। तो मेरे लिए तो करंट क्लॉकवाइज है, लेकिन यही करंट आपके लिए क्या है, एंटी क्लॉक है नहीं? तो मेरे तरफ से जो आपकी तरफ से जो फ्रंट फेस होगा उसमें अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा, और मेरे लिए अगर करंट अगर ये साउथ है यानी कि क्लॉकवाइज है तो मेरे लिए कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। तो यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर देखिए ये जो सर्कुलर कॉइल मैंने समझाया, इफ द करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट हमारे लिए क्लॉकवाइज है फ्रंट फेस पर, तो जो आदमी इसको पीछे से देखेगा, इस साइड से जो देखेगा बैक फेस से देखने पर यही मेरी करंट एंटी क्लॉक हो जाएगी, तो उस तरफ से जो घड़ी की डायरेक्शन होगी, क्लॉक की डायरेक्शन वो ऐसे होगी उस तरफ से देखने वाले आदमी के लिए जो यहां से देखेगा, ठीक। लेकिन करंट ऐसे है हमारे लिए क्लॉकवाइज, तो पीछे वाले के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसलिए बैक फेस कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। ओके, सो प्लीज रिमेंबर इट, हियर इन दिस figure we can say the current in front face is clockwise, hence it will behave like as magnetic south pole. Remember it please, it will behave like as a magnetic south pole, and we can write the direction of current in the back face from the back side will be anti-clockwise, and the direction of current in the back face will be anti-clockwise, and back face will be which pole, north pole. Back face will act like as a north pole. Okay, so in this way we can measure the poles of a current carrying circular coil. So here this is a south magnetic pole and the back face will be the north magnetic pole. Now come on this figure. Okay, now in the front face, suppose in the front face the current is anti-clockwise. If I put here, the clock will move like this one, okay, but the current is anti-clockwise. So please remember, if in any phase the current is anti-clockwise, then the front face or that face will act as a magnetic north pole, because the magnetic field line now current is in this direction, in this magnetic field here, start from here suppose we can say, and it will go to the back face, means outside it will go to the back face, means back face will be south pole, because outside the magnetic field lines are from north to south. Magnetic field line will go like this one from the north pole and will make a closed continuous curve, will end, we can say will end outside at the south pole outside, but we can't determine the the entering point, okay, and the terminating point, okay, but we can say the magnetic field lines are going like this way. Okay, so you can remember that if current is in the coil is in anti-clockwise direction, then the front face will act as a north pole. So here I am writing a N, north pole means N here, okay, just I have written this N. Okay, in the similar way, if here we made the arrow at the two ends of the S, here we will also make the arrow at the two ends of the N.
here the arrow will be like this one, and here the arrow will be like this one. You can check the direction, these arrows, put it on the two ends of the capital N, following the direction of current. Yes or no? So it means if the current in the front phase is anti-clockwise, okay, then the front phase will behave like as a north pole, and then the current in the back phase will be clockwise. That will be, so the back phase will be south pole. I am explaining with the help of this one. Okay, so please try to understand. Suppose this is the front face for me, this is the front face for me, or this is the front face for you, and your front face is the back face for me, and my front face is the back face for you. Okay, so I am making the current in my front face as an anti-clockwise. So you can check that for me the clockwise direction will be like this one for me. Okay, from my side the clock will move like this one. Okay, and from my side the clock will anti-clock will be like this one. ओके, तो मेरी तरफ से जो क्लॉक घड़ी चलेगी वो ऐसे चलेगी, और घड़ी की उल्टी जो दिशा होगी मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज वो ऐसे होगा। तो मैं इसमें अपनी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करा रहा हूँ। तो देखिए मेरे लिए ये एंटी क्लॉक है। अगर आप मेरी जगह पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको जो मैं अंगुली घुमा रहा हूँ घड़ी के डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन आप अपनी तरफ से मेरी अंगुली को क्या देख रहे होंगे, आपको मेरी अंगुली जो है मूवमेंट फिंगर का ये आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, बट फॉर मेरे लिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरे लिए फ्रंट फेस नॉर्थ पोल, और मेरे लिए जो बैक फेस है जो आपके लिए फ्रंट फेस बन रहा है वो उसमें करंट क्लॉकवाइज है आपकी तरफ से, तो साउथ पोल। ठीक है, अब इसको यहां से ऐसे समझिए। अब मैं आपकी डायरेक्शन समझा रहा हूं। ये अब हम सभी के लिए ये जो है आपका फ्रंट फेस हो गया। तो अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज कैसे होगी, पहले करंट क्लॉकवाइज ऐसे होगी, तो ये साउथ पोल, ये हमने एक्सप्लेन किया। अब हम रिवर्स ले रहे हैं सेकंड फिगर कि करंट अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, करंट इसमें कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पोल कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, लेकिन पीछे वाले फेस में करंट साउथ क्लॉकवाइज होगी। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं, अगर एंटी क्लॉक में चल रहा हूं ऐसे, अगर कोई बंदा यहाँ से खड़ा हो जाए, अगर कोई पर्सन यहाँ से खड़ा होता है तो उसके लिए देखिए करंट की डायरेक्शन, ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। जो वहां से देखेगा, उस साइड से जो देखेगा बैक फेस से, उसके लिए आप इमेजिन करिए कि ये एक क्लॉकवाइज होगा कि तो उसकी तरफ से घड़ी ऐसे ही चलेगी, जबकि हमारी तरफ से घड़ी ऐसे चलेगी। ठीक, सो इफ एंटी क्लॉकवाइज अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो दिस विल बी नॉर्थ पोल, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट विल इन द फ्रंट बैक फेस विल बी clockwise, and the back face will act as a south pole. Okay, so we can write about this one. So I am writing here in this figure, the direction of current in the front face is anti-clockwise, so this phase will behave like as you can write magnetic north pole, because current is anti-clockwise, but in the back face the current will be clockwise. Okay, but in the back face current will be clockwise, so back face will act like as south pole. So how the back face will act? Back face will act like as a south magnetic pole. Okay, so in this way we can determine the poles of a current carrying circular loop, because current carrying circular loop produces a magnetic field. Okay, and we can determine it means it may have two poles. Okay, it will have two poles definitely. So we can determine the north pole and the south pole by the clock phase rule. If the current in the circular loop is clockwise in any phase, then that phase will
behave like as a south pole, and if the current in the front and the opposite phase will behave like as a north pole, and if the current is in the front phase is north in the anti-clockwise, then that phase will behave like as a north pole, and the opposite phase will behave like as a south magnetic pole. Okay, so firstly you have to make these diagrams. Okay, you can take a screenshot for this one, and you have to make the diagrams, and you have to write this one. Okay, now on the basis of this conclusion we can write the clock phase rule here. Okay, on the basis of this. So in exams you have to explain by with the help of these figures, it's very necessary. Okay, so clock phase rule, what is clock phase rule? According, we can write according to clock phase rule, according to clock phase rule, if we can determine, according to clock phase rule, we can determine the poles, the magnetic poles, the magnetic poles of a current carrying circular loop, current carrying circular loop. Okay, so what is the law? I am writing here, if the direction of current in any phase, means there are two phases, in any phase is clockwise, then that phase will act as a south magnetic pole. South magnetic pole means the phase in which the direction of current will be clockwise, that will act as a south magnetic pole, and the back phase, means of the same coil, back phase will be which pole? North pole. Okay, first one is this. Second, we can write, if the direction of current in the front phase is anti-clockwise, direction of current in the front phase is anti-clockwise, then that phase will act how? As a north pole. Suppose the direction of current in the front phase is north, we have discussed here, as anti-clockwise, then that phase will act as a north pole, and back phase, and the direction of current in the back phase, how the direction of current will be in the back phase will be clockwise, and the back phase will behave as a south magnetic pole. Okay, so this is the conclusion. Main thing, according to clock phase rule, we can determine the magnetic poles of a current carrying circular loop. If the direction of current in any phase is clockwise, then that phase will act as a south magnetic pole, and the back phase will be north pole. Okay, if the direction of current in the front phase is anti-clockwise, then that phase will act as a north pole, and the direction of current in the back phase will be clockwise. Okay, we explained here, and the back phase will behave as a south magnetic pole, and you can make the diagram. Okay, in exams you have to make also the diagrams. Okay, which I have made here earlier on. Okay, I explained you earlier on with the help of diagram. So in exams you have to explain with the help of proper diagram also. Okay, so you can note down this one also. So in today's lecture we discussed about how we can determine the poles of a current carrying circular loop. So that's all for today's lecture. Thank you so much.